it is a great circle. Meridians? Great circle. Semi-great circle. Semi-great. They are great circle. Okay, their center passes through them. Yes, parallel latitude is a small circle. We'll talk about that. Okay. Now, North Pole and South Pole, they are 180 degree apart. They are antipodal. So as I said, innumerable number of great circles can be drawn. So meridians can be drawn. Meridian can be drawn, no, from the great circle, from the North Pole and South Pole. Yes or no? Yes, So sir. these 2 points are antipodal, so you can draw a number of. Okay. आपने celestial sphere में देखा होगा. Celestial sphere में we have zenith and nadir. Innumerable number of great circles can be drawn. We call vertical circle, जिसमें हम एक principal vertical एक prime vertical की बात करते हैं, बाकी सब innumerable great circle. So when a great circle divides the sphere into equal halves, as we said, okay, from any 2 points on a sphere, only one great circle can be drawn. Until unless these points are antipodal, when you can draw innumerable number of great circles. What is antipodal? They are 180 degrees apart. That is, they are diametrically opposite to each other. Then you can draw a number of great circles, innumerable number of great circles. Okay. Now we form a spherical triangle on a sphere. Spherical triangle. How are they formed? When a spherical triangle is a figure formed on the surface of the sphere by three great circular arcs intersecting pairwise in three vertices. And it is the spherical analog of the planar triangle. Now remember, in the planar triangle, this is a small circle. Okay, let me go back. This is a great circle. In a planar triangle, the sides are the linear measurement. In the case of a planar triangle, sides are the linear measurement, while angles, what you measure, what is the angle which you measure, they are the angle. But in the spherical triangle, sides and angles are angular measurement. In the case of side, now let's say A, B, C, this is a triangle formed by three great circles. Okay, three great cutting at the vertices. Okay, at 3 points. Okay. The side AB is the angle subtended at the center of the sphere, okay, between A and B. Side BC is the angle subtended at the center of the sphere, okay, between the point B and point C. Likewise, side CB, so side CA is the angle subtended at the center of the sphere between point C and A. So they are angular measurement. Planar triangle, they are linear measurement. Okay. These angles, how do we measure the angle? These angles are, okay, just a minute. When you measure the angle, these are the tangent drawn. Okay. These are the tangent drawn at the vertices along the great circle. Now suppose you want to know angle B. So the tangent drawn here along the arc of great circle AB and tangent drawn along the arc of great BC. These tangent, the angle subtended here is the angle B. Is that clear? Is there any confusion in this? Sides are the angular measurement, that angle at the center of the sphere subtended between the 2 points. But angles are the angle subtended between the tangent drawn along the arc of great circle at any point.
Is that clear? बताइए. Are you okay? Any Yes, question? sir. Okay. Now, every great circle has a pole. Every great circle has a pole. Okay. And that pole is located 90 degrees from the great circle. 90 degrees from the great circle. Okay. Pole of a great circle point on the surface of the sphere, which is equidistant and hence 90 degrees away from all the part of circumference of the great circle. Like you see, equid is a great circle. Its pole is the north pole and south pole, or north pole and south pole. So any point on equator is 90 degrees from that pole. The north pole or south pole there. So every great circle has two poles, and they are 180 degrees apart, diametrically opposite. Okay. Any question on this? No, Of sir. course, small circle. When we talk about small circle, they are the small circle on any sphere whose center does not pass through the center of the sphere. Okay. Now see, in a great circle, the radius of the great circle is equal to the radius of the sphere. In the case of great circle, the radius of great circle is radius of the sphere. Okay. But in the case of small circle, the radius of the small circle is smaller than the radius of the sphere because it does not pass through the center of the sphere. The small circle is a circle on the surface of sphere whose plane does not pass through the center of sphere. Okay, radius of small circle, therefore less than that of the sphere. Example, parallel of latitude, parallel of declination. Okay, so these are small circles. While equator is a great circle, good center passes, the plane passes to the center of the sphere. Okay, is that clear? As we discussed, spherical angle is the angle on the surface of sphere formed by the intersection of two great circles. How do we measure it? By measuring angle between the tangents at any point. Tangents of the great circles, arc of great circle at any point. The angle between them is the. So in practice, a spherical angle can be measured by drawing a tangent to the great circle arc from the point of intersection. Okay. The value of angle between the tangent is the magnitude of spherical angle. Remember, any angle, spherical angle, will have maximum value of 180 degrees. Okay, any spherical angle will have a value of 180 degrees. Just okay. ठीक है. Okay. And vertically opposite angles are equal. I'll come to the thing. Okay. मान लो this, sorry, this is the in plane geometry we have studied sorry, एक ये है, एक ये great circle. So these vertically opposite, this is congruent to this angle. Plane triangle में भी होता है, plane geometry में भी होता है. These are congruent. ये angles और vertically opposite angles are congruent. Remember, ये है ये पॉलिसी, ठीक है. हाँ.
इज इट क्लियर? इसका हम उपयोग करेंगे बेसिक थिंग्स, इसका उपयोग करेंगे कहाँ? टू when we are solving, we'll when you're finding angles and all, करेंगे. ये एक ग्रेड सर्कल है, ये दूसरा ग्रेड सर्कल है. This angle is congruent to vertical equal. Yeah, these angles are congruent to. Okay. What is this angle equal to? Sir, 180. 180 degree. Remember. And maximum angle of a side of spherical triangle can be 180 degrees. It has to be less than 100. Okay. Vertically opposite angles are equal. No. इसका हम उपयोग करेंगे. We'll use this. Okay, we already talked about that in practice spherical angle can be measured by drawing a tangent to the great circle arc from the point of intersection. And the value of angle between tangent to the magnitude of the tangent is the magnitude of the spherical angle, as we discussed. Maximum value of spherical angle is 180 degrees and vertically opposite angles are equal. Okay, this we have done. Okay. You just keep this in mind. But remember, it will help you. Magnitude of side of spherical triangle is the angle subtended by it at the center of the sphere and expressed in degrees and minutes of arc. Unlike a plane geometry where the sides are linear measurement, in spherical trigonometry, the sides are angular measurement, and that is the angle subtended at the center of the sphere. And maximum value of the side of a spherical triangle will be 180 degrees. Maximum angle of a side will be 180. A maximum value of angle of spherical triangle is also 180 degrees. Okay, remember. Third, okay, fourth. The sum of three sides. Sum of three sides of a spherical triangle is less than 360 degrees. Sum of the sides, three sides of spherical triangle. There are three sides. The sum should be less than 360 degrees. Okay, but sum of the angle should be anything between. The sum of three angles of spherical triangle is anything between, any value between two right angles, that is 180 degrees and 6 right angles. इसके बीच में होगा. Okay, इस चीज को याद रखिए. Spherical triangle. Anything, any right angle triangle will be anything between two. Sum of the three angles of a spherical triangle is any value between two right angles, that is 180 degrees and 6 right angles. Sum of the three sides less than 360 degrees. One thing also remember, sum of any two sides will always be greater than the third side. Here. Okay? Always be greater than the third side. And of course, greater side has greater angle opposite to it. It means, मान लो, the side has side is more than 90 degrees. The side is more than 90 degrees. The angle will also be more than 90 degrees. Angle opposite to that side will always be more than 90 degrees. मैं बताते रहूँगा when we are doing the questions, ना हम लोग जब questions करेंगे उसमें आपको idea रहेगा. Okay. Further, if the two sides of a spherical triangle are equal, the angle opposite them also equal. ये हम plane trigonometry में पढ़ चुके हैं. When the two sides of a spherical triangle are equal, the angle opposite them are also equal. This will help you when you are solving any spherical, any question on spherical trigonometry, चाहे वो celestial navigation को या ठीक है. So as I said, sum of the three sides will be less than 360 degrees. Sum of three angles will be anything between 180 to 540. Sum of any two sides will be greater than the third side.
the greater side will have greater angle opposite to it. Okay. If two sides of spherical triangle are equal, then of course angles opposite them are also equal. Of course. Then we'll go to the of course a right angle spherical triangle. A right angle spherical triangle is a spherical triangle in which one angle is equal to 90 degrees, but 90 degrees. And in a spherical triangle, it is possible to have more than one angle equal to 90 degree. मैं आपको भी फिगर दिखा देता हूँ. Okay. ओके राइट एंगल की सब इस पे क्वेश्चन करें जो वर्टेक्स पे आएंगे तो हम ये क्वेश्चन करेंगे इस पे. तो राइट एंगल स्फेरिकल ट्रायंगल इज वन इन विच an angle is 90 degrees. But in a spherical triangle, it is possible to have more than one angle equal to 90 degrees. Now, एक simple example आपको दिखा देते हैं. Let me go back to the board. बोर्ड दिखाई दे रहा है? बोर्ड दिखाई दे रहा, साफ है कि नहीं? यस सर. Okay. ये अर्थ है स्फीयर. ओके अर्थ इज स्फीयर. इक्वेटर इज अ ग्रेट सर्किल. ओके मेरिडियन इज अ ग्रेट सर्किल. A B. Okay just example PA is equal to how much? ये इक्वेटर है. ग्रेट सर्किल मेरिडियन ग्रेट सर्किल. PA is equal to how much? 90 degrees, sir. 90 degrees. This 90 degrees. PP is equal to how much? 90 degrees, sir. 90 degrees sir. And what is this angle? What are these angles equal to? 90 degrees, sir. 90 degrees sir. 90 degrees. ये भी 90 degrees. Just example. Okay. So what we said, example, we said when the two sides are equal, or angle opposite them are, इसका side का opposite ये angle है, इसका side का TB का angle है ये है, opposite they are all equal. और let's talk about rational horizon. बहुत सारे examples आपको मिलेंगे जिसमें थोड़ा सा हालांकि going great circle but थोड़ा सा you have an idea. तो ये rational horizon है. मान लो ये equator है. Okay. Body is rising here at the equator at this each point. North, south, pole. Okay. ठीक है. Body is here. ठीक है. ये ZX है. PX is equal to how much? PX is equal to how much? बताइए. PX ये E है. PX की वैल्यू क्या होगी? तो 90 डिग्री. 90 डिग्री. 90 रहेगी सर. ओके. ZX किसके बराबर है? 90 सर 90 डिग्री. ये हम देखते होंगे. But it applies. If two sides are equal, their opposite angle will be equal. Okay. Okay. तो ये दोनों एंगल, तो ये एंगल क्या होगा? ये कितना है? 90 सर. तो ये एंगल कितना होगा? 90. ये भी 90. 90 दोनों सर. इक्वल है, दोनों ऑपोजिट एंगल है इक्वल. ओके. एंड एग्जांपल ध्यान रखिए. ये
If latitude, मान लो ये latitude A है, ये latitude B है, ये pole है. So PA is equal to PB. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So this angle A is equal to angle B. Agree on this? If PA is equal to PB, this angle A is equal to angle B. Is that clear? Yes or no? Yes, sir. Okay. Now, Yes, sir. in a spherical triangle, we can solve questions using. Okay. So let us talk about my the basic change that before we come to the actual grid circle problem. Suppose this is one grid circle, this is another grid circle, a third grid circle. B, A, B. Okay. In the case of spherical triangle, and this is also applicable in the ratio of the angle and its opposite side, sine of the angle and the sine of opposite side, the ratio of sine of an angle and the sine of its opposite side, they bear a constant ratio. What it means, let's see, मैं ABC करके कर दूँ, ABC कर दूँ, ABC. So we say sine of angle A upon इस साइड को कहते हैं opposite side को small a से, B को C को opposite side को small. Sine A upon sine of the side is equal to sine of angle B and sine of opposite side of B is equal to sine of C upon sine of opposite side of B. This small thing. Okay. ये हमने प्लेन ट्रिग्नोमेट्री में भी किया हुआ है कि नहीं? Sine of any angle and its sine of its opposite side, they bear equal ratio in a triangle. Sine A upon A is equal to sine B upon sine of the opposite side, sine angle C and sine divided by sine. They bear equal ratio. यही पहला सिंपल वर्क, ये हमने प्लेन ट्रिग्नोमेट्री में किया हुआ है कि नहीं? किया हुआ कि नहीं? प्लेन में किधर से? हाँ जी, प्लेन में किधर सर? आपने 9th 10th 11th में किया नहीं होगा ट्रिग्नोमेट्री में, फॉर प्लेन ट्रायंगल. सेम थिंग फॉर स्फेरिकल ट्रायंगल. साइन ऑफ हाँ एनी सर, वो किया. याद है ना? वो सेम थिंग हियर आल्सो. Sin A upon sin A, small a, equal sin B upon sin of small b, opposite side. The sine of an angle and its sine and the sine of its opposite side bear the constant ratio. Yeah. Okay. Is that clear? अपने पैरेलक्स का वो प्रूफ किया होगा, उसमें ये यूज किया था कि नहीं? पैरेलक्स का प्रूफ किया है ना? पैरेलक्स इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल पैरेलक्स इन कोसाइन ऑफ अपरेंट ऑल्टीट्यूड. जब ये और किया होगा तब ये फॉर्मूला. ओके, दिस इज द फर्स्ट वन. ओके, व्हेन वी नो ऑल थ्री साइड्स, तीनों साइड्स मालूम है, वी कैन फाइंड द एंगल, एनी एंगल, जो भी एंगल ए एंगल बी, तीनों साइड्स मालूम है, वी कैन फाइंड एनी एंगल by using cosine formula. When all three sides are known, we can know any angle by using cosine formula. What is that formula?
cos of any angle, लिख लीजिए, cos of any angle is equal to cos of opposite side. अब पहले मैं लिख देता हूं, an angle is equal to cos of opposite side minus product of cosine of adjacent side. Product of cos of adjacent sides divided by product of sine of adjacent sides. Sine of adjacent sides. Okay. We want to know any angle. Any angle, cos of an angle is equal to cos, any angle is cos of minus product of cosine of adjacent side divided by the product of sine of adjacent side. Okay, हम इसको मान लीजिए हम जानना चाहते हैं cos of angle A. Okay, is equal to cos of small a minus cos of B into cos of C divided by sine of B sine of सर नीचे नहीं दिखाई दे रहा. okay. दिखाई दे रहा अभी? यस सर. ठीक है, तो वी वांट टू नो एनी एंगल. एंगल ए हम जानना चाहते हैं cos ऑपोजिट साइड ए माइनस द प्रोडक्ट कोसाइन डिवाइड बाय साइन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एडजेसेंट साइड साइन ऑफ बी इनटू साइन. ओके, मान लो हम वी वांट टू नो cos of angle B, cos of angle B, cos of angle B. बताइए क्या लिखेंगे? cos of opposite side क्या होगा? बताइए. cos of angle B. Sir, cos small b, sir. cos of opposite side क्या है? Sir, cos small b minus Small b cos minus of c Minus. into cos small a. Small cos of A c into cos small a. divided by sine of A. Sin a sin c. ठीक है, so we can get this angle, any angle, if three sides are known. Three sides of spherical triangles are known. We can get the any angle by using cosine formula. What is the formula? Cos of opposite angle minus product of cosine of adjacent sides of that angle divided by sine of adjacent sides of that angle. Same thing, cos of C can be one cos of small c minus cos of small a into cos of small b divided by sine of small a. Okay. When three sides are known, we can get the angle, any angle. Is that clear? Is that clear? Yes, sir. Okay. Now, suppose what we said, when three sides are known, then we can get it. But suppose two sides and included angles are known. Okay. Two sides included angles. तो हमारा फार्मूला क्या है? ओके, टू sides and included angle are known. Two sides means मान लो A and C sides है, एंगल B मालूम है, C और B मालूम है, एंगल A मालूम है. Then we can get the opposite side. We can get the opposite side to obtain the opposite side.
we can obtain the opposite side. Can obtain the opposite side of the angle. The opposite side will get, then we can get good. हमको तीनों sides मालूम तो we can get that. How? Same formula. Only thing उसमें cos of any angle is equal to cos of opposite side. ये है minus product of cosine of adjacent side. Product of cosine of adjacent sides divided by sine product of sine of adjacent side. ये है हमारा फॉर्मूला. ओके हमको अभी क्या है कि वी नो दिस एंगल, ये एंगल मालूम है. ओके हमको एडजेसेंट साइड भी मालूम है, हमको ऑपोजिट साइड निकालनी है. इसी फार्मूले को मॉडिफाई कर देंगे एंड वी कैन राइट दिस एज cos of any side. Okay, cos of side is equal to cos of opposite angle multiplied by product of cosine of adjacent side. मैं इसको मिटा के cos of any side, cos of the side is equal to opposite angle. Okay. Into product of sine of adjacent sides of the angle, sides of angles जो ऑपोजिट एंगल है उसका. ओके प्लस प्रोडक्ट ऑफ cosine of adjacent sides of that angle, of that opposite angle. ठीक है, simple. Like suppose I want to know cos A, cos of side A is equal to cos of opposite angle, cos of capital A, into product of sine of adjacent sides of the angle, into sine of B into sine of C, plus product of cosine of adjacent sides of that angle, cos of B into cos of. Suppose हमको want to know angle side C, so we can see cos of C, cos of opposite angle, cos of capital C, into the product of cosine of adjacent side of the okay, adjacent side of that angle. तो कौन सा adjacent side है? B and A. हमको डालना है C, तो angle C हुआ and product of cosine of adjacent side of that angle यहाँ लिखेंगे. Sorry, sine of B into sine of C, plus cosine of product of adjacent side of that angle, cos of B into cos of A, or cos of A into cos of B plus B. एक मिनट में गड़बड़ कर रहा हूँ. C B and यहाँ मैंने गड़बड़ किया है. Cosine of side into cosine of opposite angle into sine of the product of sine of adjacent side, A into B, sorry, A into B into A into cos of ये, sorry. ठीक है, remember cos of any side
मान लो हम इसको लेना चाहते हैं, cos of opposite angle into product of sine of adjacent sides of this opposite angle, sine A into sine B, plus cosine of the product of cosine of adjacent sides of that angle. Any question on this? उसी कोसाइन फार्मूले को we have any question? नहीं सर. Okay, so we can solve you'll be using these formulae to solve the various. Okay, सर जो आपने फॉर्मूला लिखा है उसमें प्रोडक्ट ऑफ कॉस ऑफ एनी साइड ऑफ अपोजिट एंगल. हाँ, मैं एक सिंपल लेट मी गो बैक अगेन, इसमें मिटाता हूँ. Okay. देखो हमारा फार्मूला ये है, हमारा कोसाइन फार्मूला क्या है? कोसाइन फार्मूला क्या है? मान लो ये कॉज ऑफ, हमने इसको यहाँ ट्रांसफर किया, हमको बी मालूम करना है और इसको इधर ट्रांसफर करना है. भाई हमको कॉज ऑफ साइड बी मालूम करना है. ये एक फार्मूला है ना, कॉज ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू कॉज ऑफ ऑपोजिट साइड माइनस प्रोडक्ट ऑफ कोसाइन ऑफ एडजेसेंट साइड ए एंड सी डिवाइड बाई साइन. हमने इसको यहाँ ट्रांसफर कर दिया, तो वी कैन, एंड इसको इधर ले आए ट्रांसफर करके, तो वी कैन राइट दिस cos of B is equal to cos of opposite angle, cos of B, इसको यहाँ ले आए, into the product of sine of adjacent side, तो A and C, sine of A into sine of C plus cosine of adjacent side A. भाई हमने ओरिजिनल कोसाइन फार्मूला है जो एंगल का, इसको यहाँ उसी को मॉडिफाई कर दिया एंड इसको यहाँ ले, तो कॉज ऑफ बी मिल जाएगी. सेम थिंग, यू वांट टू नो कॉज ऑफ सी, कॉज ऑफ सी स्मॉल सी साइड मिलना है हमको. ओके, कॉज ऑफ सी निकालना है, तो इज इक्वल टू कॉज ऑफ ऑपोजिट एंगल क्या है? कॉज ऑफ सी. ओके, इनटू प्रोडक्ट ऑफ कोसाइन ऑफ एडजेसेंट साइड्स ऑफ दैट एंगल. कौन है? ए एंड बी है, तो यहाँ लिखोगे साइन ऑफ ए इंटू साइन ऑफ बी प्लस कोसाइन ऑफ ए. उस एंगल का एडजेसेंट साइड्स. इज दैट क्लियर? सेम फार्मूला जो हमारा कोसाइन फार्मूला एंगल का है उसी को मॉडिफाई किया. हमको ये अभी ये चाहिए, तो हमने ये यहाँ से मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एंड देन ट्रांसफर दिस फ्रॉम हियर टू हियर. ये माइनस से प्लस हो गया, तो प्लस कॉज ए इंटू कॉज बी. अब सी के आप देख लीजिए, कॉज ए एंड कॉज सी हो गया, और ये इसको आगे तो कॉज बी इंटू साइन ए है. इज दैट क्लियर? Is that clear? जवाब दीजिए. Yes sir. Now let's take a question, ऐसे ही simple question मैं लेता हूँ. Okay, उसके बाद then we can go on the okay. In triangle PAB, in spherical triangle, सर ऊपर दिखाई नहीं दे रहा.
जगह पे बैठा है, इको जगह पे बैठा है तो spherical triangle PAB. ओके, पहले PAB, PA is equal to (60-60). PB is equal to 44 degree. Okay. AB is equal to 27 degrees 30 minutes. Okay. Find angle P. Okay. पहले हम स्फेरिकल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, तो ये स्फेरिकल ट्रायंगल है, ये P है, A है, ये ओके। PAB, PA कितना है? 66, PB कितना है? 44 डिग्री, and AB is equal to 27 degrees 30 minutes. Find angle P. Write down the formula. You know that. What is the, आप बताइए what is the formula? हमको angle P मालूम करना है. Okay. So what is the formula? Cos of angle P is equal to, बताइए बताइए 27:30 minutes. पहले उसको बताइए, पहले फार्मूला लिखो, उसके बाद cos of opposite side AB minus product of cosine of adjacent side minus cos of PA into cos of PB divide by product of sine of adjacent side. ओके, यही है ना। अब वैल्यू डालिए, इज इक्वल टू cos of 27 degrees 30 minutes minus cos of PA 66 degree into cos of 44 degree divided by sin of PA कितना 66 degree sin of 44 degree। बोलिए वैल्यूज निकालिए आप, कितना आ रहा है? Sir, angle P is equal to 20 degree 29.8 minutes. ध्यान से सर 39.2 डिग्री 39 डिग्री 11 मिनट सर। ओके, पहले आपका 66 एंड दूसरा है 44 डिग्री। ओके, cos of AB कितना है 27 डिग्री 30 मिनट्स माइनस प्रोडक्ट ऑफ कोसाइन ऑफ एडजेसेंट साइड cos of 66 डिग्री into cos of 66 degree is equal to so much divided by sin of cos of 27 degrees 30 minutes minus cosine of 66 degree into cosine of 44 degree is equal to so much divided by sine of 66 degree divided by sine of 44 degree. Shift cos कितना है? आप एक सिंपल चीज, एक चीज बताइए, यू आर यूजिंग योर मोबाइल फोन, जिसने भी कैलकुलेशन किया कैलसी सर यूज कर रहे हो ना कैलकुलेटर के लिए, कैलसी यूज कर रहे हो, कितना वैल्यू आ रहा है?
Sir, 20 degree 20 29.8. degree 29.8 minutes. हाँ, 20 degree 29. 20 degrees 29. 20 degree Don't use 29. ये क्योंकि क्या है कि वो एक बेसिक चीजें उसमें भूल जाते हैं। वो जो when you are using that जो मोबाइल कैलकुलेटर, वो गलत कैलकुलेशन देते हैं। यहाँ माइनस प्लस जहाँ भी होगा यहाँ ना, तो वो इट डजंट डू इन द सिस्टमेटिक वे। ओके, उसमें गड़बड़ी वहाँ होती है। पहले प्लस माइनस करके तब मल्टीप्लाई किया जाता है, वहाँ वो पहले मल्टीप्लाई करके फिर वो प्लस माइनस करता है। ओके, हमें कुछ ये कंफ्यूजन, जो सिस्टमेटिक सिस्टम है वैसे नहीं जाएगा। आप जोड़ करके देख मैं दिखा दूंगा आपको कैलकुलेटर, यूज कैलकुलेटर। तो यू गॉट अ वैल्यू 20 डिग्री 29.8। यस, दैट इज योर। ओके, इज दैट क्लियर? सबका यही वैल्यू है 20 डिग्री 29.8। सबका Yes, वैल्यू sir. यही है। ओके, लेट मी इसमें कोई वैल्यू डाल दें। ओके, ए भी नहीं है, एंगल पी मैं से ले सॉरी, होल्ड ऑन, मैं क्वेश्चन में दे रहा हूँ आपको करने के लिए। $59 degrees 40 minutes. Okay. $39 degrees 20 minutes. $48 degrees 45. ठीक है, ये फाइंड एंगल, फाइंड ए बी। बताइए क्या करेंगे, बताइए, आप बताओ। व्हाट इज फॉर्मूला? हमको ए बी निकालना है। तो कॉज ऑफ क्या है, एनी साइड, ये है ना, इज इक्वल टू व्हाट, बोलिए। Sir, 41 degree 17.7.
कॉज ऑफ, आपने आंसर निकाल दिया क्या? नहीं, आप एक एक करके बताऊंगा आपसे, डोंट गो, सबको साथ में लेके चलना है। कॉज ऑफ एनी साइड, कॉज ऑफ अपोजिट एंगल, कॉज ऑफ पी इनटू साइन ऑफ adjacent sides of the angle, so PA into sine of PB plus cosine of PA cosine of PB. ठीक है, निकालिए cos of say cos of P, cos of AB, यही है ना, डालिए वैल्यू। cos of P कितना है 48 डिग्री 45 मिनट्स, ओके, इनटू साइन ऑफ PA साइन ऑफ PB 40 minutes into sine of 39 degrees 20 minutes plus cosine of 39 degrees 40 minutes into cosine of shift cos, कितना आ रहा है आपका? सर 41 डिग्री 17.7 41 डिग्री 41 degrees 17.7 सर। okay 17 point, yes 41 degrees 17. ओके, तो हमने क्या, व्हाट वी हैव डन, हमको यदि तीन साइड्स मालूम है, वी कैन गेट एनी एंगल। हमको तीन साइड्स मालूम है स्फेरिकल ट्रायंगल, वी कैन गेट एनी एंगल by using the cosine formula, cos of any angle, cos of opposite side minus product of cosine of adjacent side divided by product of sine of adjacent side. If you want to know, if you know two sides included angle, not excluded angle, included angle, okay, if two sides and included angle, if you know two sides and included angle, तो उसमें हम क्या करेंगे, we use the formula, we can get an opposite side of that included angle by this formula. Is that clear? Is that clear? Yes. Okay. ठीक है, तो we can get that. Okay. इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, एक और हालांकि वो यूज नहीं होगा, बट यू कैन यूटिलाइज दैट। Now, just ओके, ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन, बिकॉज वी आर गोइंग टू फ्रीक्वेंटली यूज दैट फार्मूला टू फाइंड इनिशियल कोस हम जब आएंगे तो ग्रेड सर्किल, तो पहले मैं थोड़ा स्फेरिकल ट्रायंगल, बट दिस विल हेल्प यू आल्सो इन सॉल्विंग स्फेरिकल ट्रायंगल क्वेश्चंस इन एस्ट्रोनॉमी आल्सो, आपको यूज करते हैं तो इजीली। ओके, मान लो दो साइड दी है, ये साइड और ये साइड दी है, तो ये वाला एंगल दिया हो, अब क्या करेंगे, हमको ये एंगल मालूम करना है। सर साइन फॉर्मूला। हाँ, वेरी गुड, विल यूज साइन फॉर्मूला, जहाँ वहाँ विल साइन, क्योंकि हमको ये साइड ये एंगल मालूम है, तो साइन बी अपॉन साइन स्मॉल बी, हमको ये साइड ये
दो साइड और ये एंगल दिया है ना, वो मालूम पड़ गया, और ये एंगल दिया है, ओके। और हमको ये एंगल मालूम करना है, राइट, साइन पी अपॉन साइन स्मॉल पी। तो हमको साइन नॉट एंगल पी इज इक्वल टू साइन बी अपॉन साइन स्मॉल बी इंटू साइन। आप ऐसे निकाल, अब ये यूज में कई बार गेट स्टक, तो कहाँ आप यूज करते हो साइन का? दो दो साइड और एक एंगल दिया है, तो एंगल पी, ठीक है। दो एंगल और एक साइड दी हुई है तो भी आपको मिल जाएगा एक दूसरे, ठीक है। तो दिस इज ओके, ओके। तो दिस इज वी आर टॉकिंग अबाउट द plane spherical triangle, okay। There are spherical triangle when one of the angle is right angle. Coming back to this, okay, 12:30. Okay, let's have a break and then we start with the other, with the right angle spherical triangle and right side, what do you call it? Quadrantal spherical triangle, उसकी बात में करेंगे, तो that will be also, that formula will also be used, okay। So we briefly will talk next जो period है, we'll discuss about the right angles, उसके बाद हम ग्रिड सर्किल का है, उसके बाद हम will start with the, अब इसको फार्मूला आपको मालूम है, तो we can use this formula for calculation, okay। So let's have a break and then we come back and start with the other, 12:45